हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के PSLV-C59 प्रोबा-3 मिशन के सीधे प्रसारण में। आप सभी जिज्ञासुओं और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर रुचि रखने वाले सभी दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला क्षण होता है जब इसरो नई तकनीक, नया अध्ययन, नई खोज के कार्य रूप देने के लिए अपने नए मिशन को निष्पादित करता है। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ साक्षी बनिए PSLV-C59 प्रोबा-3 मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने हिंदी में इस प्रमोशन का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे साथ हैं मिस माधुरी पी जो इंग्लिश में इस प्रमोशन मिशन का विवरण प्रस्तुत करेंगी। हम भारत के स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाह श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। Namaskar viewers and a hearty welcome to the live telecast of the launch of PSLV-C59 Proba-3 mission. I am Madhuri giving the commentary in English and joining with me in the commentary box for commentary in Hindi is Mr. Vikas Swarnkar. The live coverage is being brought to you by Doordarshan from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, Andhra Pradesh, the only spaceport of India. The launch is scheduled to take place today, the 5th of December 2024 at 16:04 hours Indian Standard Time from the first launch pad. The PSLV-XL version of the workhorse rocket of ISRO is employed for this mission. The intent of the mission is to place Proba-3 spacecraft weighing 545.82 kilograms in an elliptical orbit having apogee of 60,530 kilometers and perigee of 600 kilometers with an inclination of 59 degrees. Up next is the integration video for the mission. Now here we see the flag off of the CBS and the first stage and first segment of the first stage of the PSLV-C59 rocket. It is a solid propellant stage. The nozzle end segment being carefully hoisted and being placed on the mobile launch pedestal at the first launch pad. The first stage of the rocket comprises of 5 segments weighing around 30 tons each. On your screens now is the integration of the middle segment with the nozzle end segment. There are 3 middle segments. This is the second among the 3. All stations stand by for the timer. T-minus 20 minutes. Control to all stations. Change over to All the 3 middle segments having integrated the head end segment follows, which is the 5th segment of the Core S139 booster. And this is the igniter, which is being carefully integrated on the top of the head end segment. As we have appraised you that this mission uses the PSLV-XL version of the rocket. These are the strap-on motors, each 1 meter in diameter and carrying 12 tons of solid propellant. On your screens now is the interstage for the first and second stage. With its retro rockets to slow it down after separation. प्रथम चरण के समायोजन के पश्चात आप यह देख रहे हैं, यह है तरल नोदक वाला PS2 स्टेज। इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। UDMH और N2O4 ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह द्वितीय चरण है। बहुत ही विश्वसनीय PSLV रॉकेट का यह द्वितीय चरण बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे क्रेन के द्वारा लिफ्ट किया जा रहा है और प्रथम चरण के ऊपर में इसे समायोजित किया जा रहा है। यह पूरा कार्य मोबाइल
सर्विस टावर पे किया जा रहा है, जिसे हम MST के नाम से जानते हैं, और यह है तृतीय चरण या ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसे चतुर्थ चरण के साथ में समायोजित कर लॉन्च पैड लाया जा रहा है। इस दौरान गुणवत्ता तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है यहाँ। अब इसे द्वितीय चरण के ऊपर समायोजित किया जा रहा है, और यह अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोबा-3 मिशन, प्रोबा-3 उपग्रह, जो कि 2 उपग्रहों से जुड़कर बना है। यह युग्म है 2 उपग्रहों का। इसमें एक का नाम है ऑकल्टर तथा दूसरे का नाम है कोरोनाग्राफ। इन्हें पेलोड एडेप्टर पर समायोजित किया जा रहा है। पूरी जांच करने के पश्चात इसे एनकैप्सुलेट कर लॉन्च पैड लाया जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित प्रोबा-3 उपग्रह। अब प्रोबा-3 को चतुर्थ चरण के ऊपर में सावधानी पूर्वक समायोजित किया जा रहा है। Clean room at the launch pad, and this is the heat shield closure for the Proba-3 spacecraft. पूरी तरह सुसज्ज अपने मिशन को पूरा करने के लिए PSLV-59, यह कुल 44.5 मीटर ऊंचा तथा 320 टन भार वाला होता है। मिशन डायरेक्टर रॉजर। प्रमोशन की उल्टी गिनती जारी है। TC SHAR 1 and 2 data loggers are ran at SHAR 1 and 2 station. Noted. This is mission director. The spacecraft Proba-3 is developed by European Space Agency (ESA) as first of its kind to perform precise formation flying maneuvers and study the sun's corona close to the solar rim. The launch is contracted through New Space India Limited (NSIL), ISRO's commercial arm. And prevailing favorable weather conditions, mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C59 Proba-3 mission at 16:04 hours IST today, that is the 5th of December 2024. All stations to note, mission director has given जी हाँ, अभी आपने authorization सुना for the launch मिशन of डायरेक्टर, इस PSLV-C59 मिशन के Proba-3 मिशन mission. जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने Based on the authorization इसका from mission director, अनुमोदन दे दिया है mission director ऑटोमेटिक hereby लॉन्च सीक्वेंस शुरू authorizes करने का। to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV-C59 Proba-3 mission at 16:04 hours IST today, that is 5th December 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C59 Proba-3 mission. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। यह यान निदेशक द्वारा जारी किया जाता है। Based on the confirmation from all the participating systems, the automatic launch sequence is initiated at T-14 minutes 30 seconds. Hereafter, the ground computers run orchestrated checks on the critical launch vehicle components. If all is well, control is handed over to the onboard computers very close to the launch time. प्रोबा-3 युगल उपग्रह का प्रमोशन PSLV-C59 द्वारा आज 5 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय अनुसार शाम 4:04 पर किया जाएगा। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। इसमें कुल 545 किलोग्राम भार वाले युगल उपग्रह को 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 59 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा। प्रोबा-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी की कक्षा में नई तकनीकों का प्रदर्शन, मान्यकरण
और परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए एक श्रृंखला है। प्रोबा-3 युगल उपग्रह भी इसी श्रृंखला में चौथी कड़ी है, जो सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वातावरण का अवलोकन प्राप्त करने के लिए 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सटीक गठन उड़ान का प्रदर्शन करने जा रहा है। अब आपके सामने इस मिशन का कर्टन रेजर वीडियो आ रहा है। PS4 actuation in progress. The Indian Space Research Organization, ISRO, is poised to make history again as it gears up to launch the European Space Agency's project for onboard autonomy Proba-3 mission in December 2024. This PSLV-C59 mission is the dedicated commercial mission of New Space India Limited, ENSIL, the commercial arm of the Indian Space Research Organization, ISRO. The Proba-3 mission consists of 2 satellites, the occulter and the chronograph. With a combined weight of approximately 560 kilograms, these satellites are set to be launched in a stacked configuration using ISRO's workhorse launch vehicle, the PSLV. The PSLV-C59 mission will be undertaken from first launch pad located at Satish Dhawan Space Center, SDSC Shar, Sriharikota. This mission marks the 61st flight of the Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, and the 26th mission using the PSLV-XL configuration. The Proba-3 mission, dedicated to the exploration of the Sun's corona, seeks to achieve its objectives through the deployment of 2 satellites in a highly elliptical orbit. Proba-3's design will enable continuous views of the Sun's corona, which Earth-based observers only witness briefly during solar eclipses. This precise mission relies on millimeter-level accuracy to cast a shadow between the 2 satellites, effectively blocking direct sunlight and providing clear observation of the Sun's outer atmosphere. This mission demands a high-altitude orbit, enabling the satellites to fly in formation for about 6 hours at peak altitude, where the influence of Earth's gravity diminishes, reducing propellant usage and facilitating optimal positioning control. Additionally, the spacecrafts carry instruments such as spectrometer and radiometer to study radiation near Earth and measure total solar irradiance, which is vital for climate science. This momentous event not only showcases the spirit of international collaboration in space exploration, but also highlights the relentless pursuit of knowledge and innovation. That was a curtain raiser video brought to you by Capacity Building and Public Outreach Office of ISRO. We are 9 minutes 45 seconds from the launch. As the countdown is progressing unhindered and it's all good for the launch, let me take the viewers through the nominal events expected to take place during the launch and ascent. Liftoff coincides with T0, which is scheduled at 16:04 hours today with the ignition of PS1 core stage. The 4 ground-lit strap-ons ignite 400 milliseconds later. 25 seconds into the flight, the 2 air-lit strap-ons are also ignited. The rocket would have attained 2.76 kilometers altitude by then. Having completed their respective action times of 69.5 seconds and 67 seconds, the ground-lit and air-lit strap-ons are jettisoned from the ongoing vehicle. The first stage takes the PSLV rocket up to an altitude of 58.25 kilometers and is separated at 109.7 seconds into flight. 200 milliseconds later, the second stage, PS2, a liquid stage based on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, begins its operation.
The duration of PS2 operation is 152.5 seconds. In the meantime, the PSLV would have ascended from 58.4 kilometers altitude to 165 kilometers altitude. As the dense atmosphere will be crossed during PS2 regime, two more important flight events take place. That is the initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing. -8 minutes. PS2 separates at 262.4 seconds into flight. Solid propellant based third stage PS3 ignites 1.2 seconds thereafter. During the 120 seconds of its thrusting, the rocket adds 79 kilometers to its altitude and a significant 2.54 kilometers per second in relative velocity. Coasting phase for PSLV-C59 mission is expected to last for about 105 seconds. During this regime, there will be no active thrust development by the stage. The relative velocity reduces by 0.1 kilometers per second or 360 kmph as a result. The rocket can ascend by 96 kilometers. PS3 separates 489.2 seconds into flight and PS4 ignites 10 seconds thereafter. PS4 is a pressure-fed liquid engine which will operate for 516 seconds for this present flight. It shuts down at 1015.5 seconds into flight. PS4 thrust regime adds 655 kilometers to the altitude. 107 seconds after the shutdown of PS4, the injection conditions for Proba-3 spacecraft separation are achieved. Altitude of 1267.9 kilometers and relative velocity of 9.4 kilometers per second. The spacecraft is injected in a stack configuration. The orbit is 600 by 60,530 kilometers, a highly elliptical orbit. After a short preparatory period, the two satellites will be separated and injected into a safe relative tandem orbit. During the commissioning phase of around 4 months, the collision avoidance maneuver, formation flying maneuvers, and testing of scientific observations will be carried out. Thereafter, the first results from Proba-3 will be obtained. अब हम प्रमोशन से 5 मिनट 48 सेकंड की दूरी पर हैं। यह मिशन PSLV का 61वां प्रमोशन मिशन है और इस मिशन में PSLV के XL संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। XL संस्करण में कोर सॉलिड बूस्टर के साथ 12 टन के 6 PS0 सॉलिड बूस्टर साथ में संलग्न रहते हैं। इससे पहले हमने PS0 XL बूस्टर के साथ PSLV-XL का प्रमोशन 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्वर्णिम अध्याय आदित्य L1 के प्रमोशन मिशन के रूप में देखा था और आज हम फिर से तैयार हैं एक और मील का पत्थर पार करने के लिए जिसका नाम है PSLV-C59 Proba-3 मिशन। T-5 मिनट्स। इस प्रमोशन मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। T0 पर कोर S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा और इसके साथ ही 400 मिलीसेकंड पर ही ग्राउंड लेड स्ट्रेपॉन यानी PS0 मोटर का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। इसमें 4 स्ट्रेपॉन प्रज्वलित होंगे। उसके 25 सेकंड के पश्चात और 2 स्ट्रेपॉन बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। यह स्ट्रेपॉन बूस्टर्स T+70 सेकंड्स और T+92 सेकंड्स क्रमशः पर अपना कार्यकाल समाप्त कर यान से पृथक कर दिए जाएंगे। इसके बाद T+110 सेकंड्स पर कोर बूस्टर को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के पृथक होने के पश्चात दूसरे चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही करेगा। इस चरण के दौरान ही लगभग 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। और द्वितीय चरण के कार्यकाल के समाप्त होने पर उसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके द्वितीय चरण के पृथक होने के 1 सेकंड के पश्चात ही कर दिया जाएगा।
इस समय यान की ऊंचाई लगभग 165 किलोमीटर की होगी और Onboard computer in flight mode. 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण का कार्यकाल 20 सेकंड का होगा और यान की गति इसके अंत तक 7.45 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। तृतीय चरण के कार्यकाल समाप्त होते ही कोस्ट फेज की शुरुआत होगी, जिसमें बिना किसी प्रणोद के पहले से प्राप्त संवेग से यान 116 सेकंड में 100 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करेगा। फिर तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के 10 सेकंड के पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन प्रारंभ होगा। यह वह अंतिम चरण है पीएसएलवी प्रमोचन यान का, जो उपग्रह को 9.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग तथा निर्धारित कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। पूरे प्रमोचन का कार्यकाल लगभग 1122 सेकंड का है। उल्टी गिनती अबाध रूप से जारी है प्रमोचन की। अब हम प्रमोचन से 2 मिनट 27 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी तंत्रों की आंतरिक जांच की जा रही है। T-2 मिनट्स तथा पायरो सर्किट को आर्म मोड में किया जा रहा है। It's a bright sunny day here at Sriharikota today. All set for the PSLV-C59 Proba-3 mission. We are 1 minute 40 seconds from the launch time. The Proba-3 spacecraft is developed by European Space Agency and the launch is contracted through New Space India Limited, NSIL, ISRO's commercial arm. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute. Sir, अब हम ठीक 1 मिनट दूरी पर -55 प्रमोचन seconds. से सभी गतिविधियां आबाद रूप से जारी। -50 seconds. sequences are on. सेकंड्स पर रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर को प्रज्वलित किया -45 जाएगा। seconds. फिर T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा। -40 seconds. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV-C59 Proba-3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV-C59 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और अपने उद्देश्य दिशा की ओर बढ़ा हुआ PSLV-C59। The core S139 stage thrusting along with the solid strap-on motors. +40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकेंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. We are +1 minute. 58 seconds into the launch. Burning together the first stage, Shadow man at core motor and Ground the lead strap-on strap-ons strap together generate about 9000 kilonewton Sharp thrust. man at tracking. इस क्रम First में। 1 stage, 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 1 stage,
ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्करण, तत्पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को पृथक किया जाएगा और अंत में प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे भी यान से पृथक किया जाएगा। The SHAR telemetry and tracking station presently acquiring the trajectory data. There is a confirmation about the strap-on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. +3 मिनट। जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. SHAR and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed by the Range Operations Director. This stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading. 239.6 kilonewtons vacuum thrust. यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आए हुए गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रमोशन मिशन के साक्षी बन रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज प्रारंभ होगा। PS3, the operation time is 120 seconds. As we informed you earlier, significant increase in relative velocity takes place during the PS3 thrust regime. यह उड़ान दक्षिण पूर्वी दिशा की है। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक कर रहे हैं और हम तक सभी आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।
तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है पीरियड ऑफ 105 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली और कोर्स फेज प्रारंभ हो चुका है। यह लगभग 116 सेकंड का होगा। इस दौरान यान प्राप्त संवेग से लगभग 100 किलोमीटर प्राप्त करेगा। Now the PSLV is under coasting phase. The third stage has completed its operation. Presently there is no thrust being developed. However, the vehicle continues to be steered. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए, इसे हम टेक्स्ट बुक लॉन्च भी कहते हैं। परफॉर्मेंस नॉर्मल। PS3 separation is scheduled at 489.2 seconds into flight. We are 450 seconds into the launch. प्रोबा-3 उपग्रह अपनी कड़ी में चौथा अध्याय जोड़ने जा रहा है। इससे पहले प्रोबा-1 को 2001 में पृथ्वी के प्रेक्षण उपग्रह के रूप में प्रमोचित किया गया था, जो कि 20 साल से अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसके बाद प्रोबा-2 का प्रक्षेपण 2009 में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए किया गया। तत्पश्चात प्रोबा-V थर्ड स्टेज सेपरेटेड। अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने पुष्टि की कि तृतीय चरण को भी यान से पृथक कर दिया गया है। अब इसके 10 सेकंड के पश्चात फोर्थ स्टेज इंजन स्टार्टेड। जी हाँ, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। The fourth stage has commenced its operation. It's the uppermost stage. Twin pressure-fed engines operating on earth-storable propellant combination of monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen. दर्शकों, आपने गणतंत्र दिवस की परेड तो देखी ही होगी और उसमें फाइटर जेट एरोप्लेन की विभिन्न गठन उड़ानें, जिसे हम फॉर्मेशन फ्लाइंग कहते हैं, कितना आश्चर्य और रोमहर्षित करने वाला होता है। कितनी सटीकता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही दृश्य आज हम अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में देखने जा रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया प्रोबा-3 एक अनूठा मिशन है, जो यह फॉर्मेशन की तकनीकी तथा तकनीक दोनों का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस मिशन में 2 उपग्रह हैं, जो प्रमोचन यान से पृथक होने के पश्चात आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह पहली बार है जब एक ऑकल्टर और एक कोरोनाग्राफ उपग्रह फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यह आगे आने वाले बहु उपग्रह मिशनों में गठन उड़ान का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इस फॉर्मेशन में दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 144 मीटर की दूरी होगी और इसे मिलीमीटर की सटीकता के साथ 6 घंटे तक के लिए उस फॉर्मेशन में बनाया रखा जा सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह फॉर्मेशन ये उपग्रह आपस में सामंजस्य बनाते हुए ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से करने वाले हैं, यानी बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट की मदद लिए। इस मिशन में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के तहत आपस में टकराव से बचाने के लिए कार्यवाही निर्मित की गई है। इससे अंतरिक्ष मलबा का खतरा कम होता है। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रोबा-3 मिशन में कुल 3 उद्देश्य हैं। कोरोनाग्राफ उपग्रह से किसी भी समय सूर्य की आंतरिक वातावरण का साफ चित्र प्रदान करना, जो कि अब तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अध्ययन करने के लिए मिल पाता था। इस कार्य के लिए ऑकल्टर उपग्रह में 1.4 मीटर का ऑकल्टर डिस्क लगा हुआ है, जो कि एक अपारदर्शी डिस्क है, जो एक गठन में सूर्य को ढक लेगा और तब कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का सटीक चित्रण ले सकेगा। दूसरा उद्देश्य है इसमें डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर की मदद से सूर्य से उत्सर्जित कुल विकिरण का मापन कर सकना। यह मापन कई मायने में सौर अध्ययन के लिए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा। तीसरा उद्देश्य है
3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पृथ्वी की विकिरण पट्टी से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लक्स का मापन करना। यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इस तरह प्रोबा 3 अपने 2 साल के अभिकल्पित जीवन काल में निरंतर चित्र अधिग्रहण, कक्षा में मेल, सटीकता, निकटता संचालन, गठन संचालन, कोरोनाग्राफ अवलोकन का प्रदर्शन करने जा रहा है। +12 minutes. Long burn time of 516 seconds or 8.5 minutes for the PS4 stage for the PSLV-C59 Proba-3 mission. We are 732 seconds into the flight. The Yataraga station has to receive the data. So far, Shar and Port Blair stations were receiving it. Of the many intriguing mysteries of the space and celestial bodies that scientists study and uncover, the study of sun is an important one. The space weather, influenced by the solar wind and coronal mass ejections, takes birth in the corona of the sun. While there are instruments and methods to observe the low corona nearer to sun and high corona that are farther away, the region between the two, a gap, is observable during terrestrial solar eclipses only. 10 minutes of duration for every solar eclipse and such 60 eclipses in a century is all the time the scientists on Earth are left with to study the gap corona of the sun. Proba-3 mission by ESA addresses this limitation. The occulter spacecraft will cast a shadow on the coronagraph spacecraft for 6 hours near the orbital apogee of 60,530 kilometers using its 1.4 meter diameter disk. +14 minutes. At such a far distance from Earth, the influence of gravity is less, making it easier to maintain the attitude of the spacecraft at 150 meter separation between them to a few millimeter and arc seconds. 4th stage performance normal. We have the confirmation of the healthy operation of the 4th stage of PSLV. The Yataraga station has started to acquire data and currently providing us the trajectory information. Compared to relying on natural solar eclipses, Proba-3 will provide 100 times increase in the observation time for scientific studies. Proba-3 will be world's first spacecraft mission for precise formation flying. The acronym PROBA indicates Project for Onboard Autonomy. The formation flying experiments will be performed autonomously on board without relying on guidance from ground. +15 minutes. Speaking of the technicalities of Proba-3, the occulter spacecraft features a 1.4 meter occulting disk which will be kept perpendicular to the direction of the sun's light. This disk will cast a shadow of about 8 centimeters width at 150 meters. The coronagraph spacecraft hosts a scientific telescope which has 5 centimeters aperture. The goal is to maintain the coronagraph aperture within the 8 centimeters shadow with millimetric accuracy. Now a brief on the scientific instruments on Proba-3. The most important is the coronagraph called ASPIX, an acronym for Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging Investigation of the Corona of Sun, which will observe the structure, dynamics and heating process very close to the sun's surface, refine our understanding of the interaction between the sun and its atmosphere, and study the coronal mass ejection. The second instrument is DARA, that stands for Davos Absolute Radiometer, mounted on sunward side of occulter spacecraft. It continuously measures solar irradiance, an essential variable for climate studies. The third instrument is High Fidelity 3D Energetic Electron Spectrometer,
It is hosted on the other side of the solar array of the coronagraph spacecraft to measure electron fluxes as it passes through the Earth's radiation belts. It gathers this data during its journey towards the perigee of 600 kilometers, which is important for space weather studies and astronaut health. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा तैयार किया गया यह युगल उपग्रह, जिसे प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी का नाम प्रोबा के नाम पे रखा गया है। इसमें लगे 3 उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझा सकेंगे कि सौर कोरोना सूर्य की तुलना में अधिक गर्म क्यों होता है। इस अध्ययन के लिए इसमें ऑकल्टर नामक साथी उपग्रह द्वारा कोरोनाग्राफ उपग्रह पर सूर्य की कृत्रिम ग्रहण का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑकल्टर के डिस्क की छाया कोरोनाग्राफर पर पड़ेगी और उस समय उसमें लगे कैमरे की मदद से वह सूर्य के वातावरण के अध्ययन कर सकेगा। अब प्रोबा 3 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में प्रोबा 3 युगल उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। We are very close to the most awaited event, the satellite separation. The injection parameters are closely achieved. Plus 18 minutes. कुछ ही क्षणों में प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को चतुर्थ चरण से पृथक कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वह 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। Proba 3 satellite separated. जी हाँ, हर्ष का पल यहाँ पर आ चुका है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की कि प्रोबा 3 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. PSLV-C59 has injected Proba 3 satellite into the desired orbit. PSLV-C59 Proba 3 mission is fully accomplished. Proba 3 spacecraft having been injected in its orbit. Congratulations to Team ISRO and ESA team for the success. We take leave from you, and up next is the address by Chairman ISRO, Dr. S. Somnath. जी हाँ, अब हम आपको ले चलते हैं इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ के भाषण के लिए और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। CM. Both of you. The PSLV-C59 Proba-3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth, and 60,000 kilometers at its apogee, the farthest point, and an inclination of 59 degrees. It has been precisely achieved by PSLV in its 61st mission. So congratulations to the entire PSLV project team as well as for Proba team. And we wish all the very best to Proba for their further operations and achieving the mission goals. Congratulations to both the teams. Thank you. Let me take this opportunity also to mention that this is a mission accomplished on contract by NSIL. So we have today both the mission director
as well as the CMD of NSIL here. So first I would like to hand over the mic to the mission director. Thank you, sir. Hearty congratulations to ESA, our esteemed customer. Hearty congratulations to ENSIL for facilitating this launch. Wish all the best for the Proba-3 mission, which is the coming days will be demonstrating the world's first precision formation flying double satellite mission. This is the 61st launch of PSLV and 26 in the XL configuration. The satellite has been injected into the intended orbit. Congratulations to Team ISRO for the sincere efforts ever since we started the campaign on October 3rd. Thanks to Chairman ISRO for the inspiring guidance and all center directors for the wholehearted support that has been offered over the past few months. Yesterday we had a call-off, but all our teams have acted swiftly to save the vehicle and getting back to the countdown at the earliest. Let me thank all the teams who have responded to this requirement, especially the chairman and members of MRR and lab, countdown committee, safety teams from SDSZ, LPSC, VSSC and other centers. Let me thank all the SDS and SR agencies in different centers and chairman and members of all the DRTs for the extensive reviews clearing all systems. I place on record our appreciation for the industry partners who have been realizing different systems and doing the integration. Also a word of appreciation to the admin and auxiliary staff who have supported our campaign activities. Let me take this opportunity to thank all the mission executives, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Chandramouli, Range Operations Director Grahadure, TTC Network Director Raghavendra, Satellite Director Abhinav Ruhela for their tireless efforts. And I also thanks to Ravindra Babu, APD PSLV mission, all the DPDs, PMs and other core team members and the efficient PMO team for managing the campaign activities. Finally, a word of thanks to all our family members who give us emotional support for keeping our missions successful. Wishing all of you a good day. Thank you. We would like to hear a word of appreciation from CMD and NSIL. Good evening, everybody. Let me just extend very hearty congratulations to Team ISRO for giving our customer from European Space Agency one of the beautiful launch we could have ever expected. And let me tell you, this is the first time PSLV has gone into such an elliptical orbit. I have seen the PSLV missions doing GTO, sub-GTO, but a 60,000 kilometer orbit for ESA was really special. As you have heard, the Proba-3 satellite, which was launched on PSLV, it was a single stack. I know they had two spacecrafts on board, which will get separated in the coming month. But what is very interesting in the Proba-3 mission, in addition to the technology demonstration of a extremely precise formation flying, they also have a very interesting scientific experiment of solar coronagraphy. I know we had a big delegation from ESA and all their participating industry partners who have come in large numbers. Let me just welcome them here for being present in our launch base and witnessing this beautiful launch. Let me assure the ESA team in the future, I think we will provide the best of our launch services from the Indian soil for any of your future missions that you envisage in the coming months. Thank you very much once again, and wish Team ISRO the hearty congratulations once again for giving us such a beautiful mission for our customer from ESA. Thank you very much. Thank you, CMD and SIL, for that assurance of giving more launches to PSLV from our customers, and it's always something very interesting for us to work on different types of mission. And such a mission is coming up as the PSLV-C60. It's going to be the mission to demonstrate the space docking experiment called SpaceX. And the rocket is just ready now. We are waiting for the final phase of activities leading to the launch, possibly in December itself. So until then, we come back for another launch from Satish Dhawan Space Center. Thank you so much for joining us in this live telecast of this launch from Satish Dhawan Space Center. And thank you for joining us in this excellent mission of PSLV-C59 Proba-3. And let us wish all the very best for our customers, the ESA team, and also the Proba-3, and which is very important for us because this is a mission which is looking at the heliophysics, and we have strong science group within the country who have working collaboration with the scientists in ESA who is having interest in this mission. And all of you know that we have a solar mission, Aditya L1, which is working along with this satellite and will give fantastic science outcome in the days to come.
Thank you all the very best. Join us until then for the next mission. Thank you so much.